So the pressure would be defined as a force being applied on an area or on a certain particular region. तो जितने भी आप रीजन के ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं उसको आप प्रेशर कंसीडर कर रहे हो. Now the pressure has got its formula from the very definition. जैसा आप लोगों को पता है कि हम definition से formulas बना लेते हैं. तो definition हमारे पास है force applied per unit area. So we'll just pick up the force, we'll pick up the area and apply it into the formula, which is going to be P is equals to F upon A. Now we have got the SI unit as well. तो SI unit हमारे पास basically यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, लेकिन total 3 SI units होते हैं pressure के. The first one is Pascals. ये most commonly used है, आपको सबसे ज़्यादा oftenly नजर आएगा. While if we talk about the second one, it is ATM, which is atmospheres. और atmosphere जो है वो बड़ी values के लिए होता है, for the larger values of pressure. And then the third one is not mentioned over here, लेकिन वो होता है Newton upon meter square. So the force is in newtons, the area is in meter square. So Newton upon meter square की form में भी इसका SI unit हो सकता है. So we have got 3 SI units. The most common one is the first one, which is pascals. Now coming to the value of ATM, 1 ATM is equivalent to 1 lakh pascals. And then we have the relations of pressure with different values or different things. Like अगर आप pressure को force के साथ relate करें, तो pressure और force हमेशा directly proportional होते हैं. Like if you are increasing the force that you are applying on a particular body, तो आप जितना force बढ़ाते जाएंगे उतना ही pressure भी rise करता जाएगा. And if you are reducing the force, you are reducing the pressure as well. Then coming to the next one, we have area, which is inversely related. तो वो आपको formula से भी judge करने में आसानी रहेगी. That since you can see pressure and force are directly related, तो आप जितना force को increase करोगे pressure भी बढ़ जाएगा. While if you consider pressure and area, they are inversely related. So the area is going to increase and in turn reduce the pressure. तो अगर आप area बढ़ाएंगे, pressure को क्या कर रहे होंगे आप? Reduce कर रहे हैं. So this is the very concept of pressure's relation with force and area. Now moving forward, we have different sort of examples over here. We are not going into the details of them currently. Next, we have pressure in liquid. Pressure in liquid की logic ये है कि जब भी कभी कोई liquid या कोई भी fluid किसी एक particular container में रखा होता है, तो उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर, उस कंटेनर की जो साइड्स हैं या जो बॉटम है, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रही होती है बाय द पार्टिकल्स ऑफ दैट लिक्विड. जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम हियर टू देयर, वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स वॉल को स्ट्राइक करते हैं और एक सर्टेन फोर्स या एक सर्टेन प्रेशर जनरेट कर रहे होते हैं. So this is what the pressure or the force of a liquid particle is. अब concept ये समझना है कि ये जो force और ये जो pressure है, इसको हम किन चीजों के ऊपर define कर सकते हैं और what are the factors that would change or increase or reduce this particular pressure. किन तरीकों से हम इस pressure को बढ़ाना या कम करना perform कर सकते हैं. So we have got 3 things over here to like keep in knowledge. तो 3 factors क्या हैं हमारे? The first one is depth. मैंने आपको depth की logic बताई थी कि जब आपकी depth ज़्यादा हो जाती है तो आपके overall particles increase कर जाते हैं. So as you have got more particles, you will have more force coming to the bottom. Bottom की तरफ ज़्यादा force imply हो रही होगी. And as you move up, तो जब आप upwards move करते हैं तो आपकी जो force है वो कम होती जाती है, क्योंकि जितने आपके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को फोर्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं. एंड सिंस दे आर ट्रांसफरिंग द फोर्स टू वन अनदर, दे आर लाइक एडिंग अप देयर फोर्सेस. जितनी आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे उसके लिए आपको पार्टिकल्स भी इंक्रीज करने होंगे. नाउ दिस इज द वेरी कांसेप्ट ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ. नाउ कमिंग टू द डेंसिटी, डेंसिटी की भी यही लॉजिक है. अगर आप पार्टिकल्स की डेंसिटी इंक्रीज करते हो, like in this particular case, वो क्या होगा
कि आपके जो पार्टिकल्स का काउंट है वो इंक्रीज कर जाएगा, पार्टिकल काउंट वुड इंक्रीज एंड दिस वुड रिजल्ट इन द प्रेशर बीइंग इंक्रीज अप टू अ लेवल, लाइक वो एक सर्टेन लेवल तक बढ़ जाएगा। पर इफ यू रिड्यूस द डेंसिटी, आपने जो डेंसिटी है वो अगर रिड्यूस कर दी तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और उनकी फोर्स जो है वो एक साथ एड अप होने में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो अपनी फोर्स को एक साथ एड अप नहीं कर पाएंगे and this would result in the particles having lesser of their pressure. Now, moving forward, we have the third concept which is of gravity. तो ग्रेविटी की लॉजिक ये है कि जब भी कभी आप ग्रेविटी के साथ डील कर रहे होते हैं, यू आर बेसिकली मेकिंग, okay, so I think you people are having some issues with the voice. आप लोगों को कुछ glitch आ रहा है? Can you please confirm, Amna and Husna? Are you people having any sort of glitch? Just give me a second. You basically need to have understanding of all of these three factors. आपके पास पहला factor है depth, the second one is density, and the last one is gravity. All three of these factors are directly related to the amount of pressure in a particular liquid. अब जितना भी आप इन तीनों factors को increase करते जाओगे, उतनी ही आपकी जो density और इतना ही आपका जो pressure है वो rise कर जाएगा. So all three of these factors are directly related to the pressure in liquid. Now coming to the formula, we have P is equals to rho GH. Okay, so the term rho over here is for density. Density का जो symbol है उसे rho consider किया जाता है. Then we have G which is gravity and H which is height or depth. Now one very important factor to be considered over here is कि जब भी कभी आप प्रेशर इन लिक्विड की बात करेंगे तो विड्थ को कंसीडर नहीं करना है, विड्थ इज नॉट कंसीडर्ड एट ऑल. उसके रीजन ये है कि अगर आप किसी भी कंटेनर को वाइड करते हैं तो आप एरिया इंक्रीज कर रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज वेल. तो आपने फोर्स को इंक्रीज किया है लेकिन आपने एरिया को भी बढ़ा दिया. So that does not cause any difference to the pressure. Now, moving forward, we have our concept of open and closed container. अब ये बहुत एक important concept है because it is like very oftenly coming up in MCQs. तो इसको समझना बहुत जरूरी है. Open containers की logic ये है कि open containers में आपकी जो air है, the air from the surrounding is going to apply its own force on the water as well. तो जो liquid है, whether it is water or any sort of liquid, उसके ऊपर एक certain force air की भी apply हो रही हो in the open container, right over here. Then over here, अगर आपने open container में कोई ball या कोई object drop कर दिया है within the fluid, तो fluid की force नहीं लगेगी सिर्फ उस ball या उस object पे. अब उस object के ऊपर एयर की प्रेशर या एयर की फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी. सो दिस मींस दैट द टोटल प्रेशर ऑन दैट बॉल इज गोइंग टू बी द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एज वेल एज द प्रेशर ऑफ एयर. नाउ कमिंग टू द क्लोज्ड कंटेनर, तो क्लोज्ड कंटेनर में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सिर्फ लिक्विड का प्रेशर लग रहा है. व्हाई इज दैट सो? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एयर है वो इन कांटेक्ट नहीं है, द एयर इज नॉट इन कांटेक्ट विद द लिक्विड. तो अब जो पार्टिकल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉल पे या ऑब्जेक्ट पे इन द क्लोज्ड कंटेनर, तो वहां पे आप ना सिर्फ ये देखें कि कंटेनर क्लोज्ड है, बल्कि आपने ये भी नोटिस करना है कि अब एयर पार्टिकल्स अपनी फोर्स ऐड नहीं करवा रहे हैं लिक्विड में. सो द ओनली प्रेशर इज गोइंग टू बी द प्रेशर ऑफ लिक्विड. While in the open container, it is going to be the pressure of liquid as well as the pressure of air. Now, moving forward, we have pressure in braking system.
तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो लिक्विड प्रेशर के ऊपर वर्क कर रहा होता है, प्लस इसमें सॉलिड प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, तो इसको समझना भी जरूरी है। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि आपके पास यहाँ पर एक brake pedal है which is under your feet, and you have got the tires having the brake pad or the brake system attached to them। तो जैसे ही आप ब्रेक पेडल पे पैर रखते हैं, आप एक फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं इनटू द लिक्विड, और जैसे ही आप इस लिक्विड के अंदर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये फोर्स मूव करते हुए कहाँ तक जाएगी, ये फोर्स मूव करते हुए ब्रेक पेडल तक जाएगी, और फिर उस ब्रेक पेडल पे या उस ब्रेकिंग सिस्टम पे फोर्स अप्लाई होके व्हील को रोका जाएगा। वंस वी आर लाइक डन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन, तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये एक प्रेशर इन लिक्विड का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर विड्थ का प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव स्मॉलर एरिया, while on the right side we have greater area। लेकिन क्योंकि ये प्रेशर इन लिक्विड का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर आपका जो एरिया है या जो आपकी विड्थ है वो कभी भी प्रेशर को डिफर नहीं करवा सकती। सो द प्रेशर इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एंड एरिया, एंड दिस बिकम्स F1 over A1 is equals to F2 over A2। Now F1 and A1 are the force and area on the left side, and F2 and A2 are the force and area on the right side। Now moving forward, we have atmospheric pressure। Atmospheric pressure क्या होता है? Atmospheric pressure is basically the pressure of air particles onto the objects in contact। Like अगर आप अपनी बॉडी या किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात करें which is in contact with air, तो एयर के पार्टिकल्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स आपके ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, एंड दैट फोर्स इज बेसिकली द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द पॉइंट हियर इज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कितनी वैल्यू रखता है और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 1 lakh pascals। The atmospheric pressure has a fixed value of 1 lakh pascals, which is equivalent to 1 atmospheres। 1 atm के बराबर होता है atmospheric pressure। Now the factors that could like change or differ the atmospheric pressure is the amount of air present। like किसी एक स्पेस में कितने एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसकी बेसिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन किया जाता है। सो इफ वी हैव sort of area or a place जहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपने डिफर करना है, तो आप कैसे डिफर करेंगे उसे? इफ यू वांट टू रिड्यूस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दैट प्लेस, आप वहाँ पे एयर पार्टिकल्स को कम कर देंगे, एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द एयर प्रेशर इन दैट प्लेस, आप वहाँ के एयर पार्टिकल्स की काउंट को बढ़ा देंगे। इन द सेम वे इफ यू गो टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे, so the air pressure would reduce। So you need to note it down that on Mount Everest, the air pressure reduces due to lesser air particles। ओके तो जितने भी एयर पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, दे वुड श्योरली बी लेसर देन व्हाट आर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड लेवल। तो इसीलिए वहां के पार्टिकल्स का काउंट कम है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो वहां पे प्रेशर भी कम होगा। द प्रेशर वुड बी स्लाइटली डिफरेंट। लाइक ऑन द ग्राउंड लेवल इट्स अराउंड 1 lakh पास्कल्स, तो माउंट एवरेस्ट पे इट वुड बी अराउंड 90,000 और 95,000 पास्कल्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we need to understand one more thing over here। एग्जामिनर कभी कभार हमसे ये पूछ लेते हैं that why does it take more time to cook the same food on Mount Everest compared to the ground। तो कुक करने के लिए हमें माउंट एवरेस्ट पर ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? The examiner could ask it।
So we need to tell him that due to lesser air pressure, it takes longer for the food to cook. Okay, so now we know that lesser air pressure would would increase the amount of time for cooking. But we also need to understand the back story कि ऐसा क्यों हो रहा है, why is it happening? तो ऐसा इसलिए होता है that if let's say we have a cooker or we have any sort of utensil in which we are cooking the food, तो यहाँ पे जो आपका food है, it is being pressed. It is being pressed from the top. और जब इसको आप टॉप से प्रेस कर रहे होते हैं, like the air is applying a force onto it, it is easier to cook or easier to boil. इसका रीजन क्या है? The reason behind it is that pressure is directly proportional to temperature. आप जब प्रेशर ज्यादा करते हैं तो आपका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है. So because the pressure on Mount Everest is comparatively lower, it would take more energy to reach that same temperature. अब let's say 180 m पे आपको 100 डिग्रीज रीच करने के लिए 20 मिनट्स कंज्यूम हो रहे हैं. So on Mount Everest, if the pressure has been reduced to let's say 0.9 atm, 100 degrees Celsius would be reached in a much longer time. So it would take let's say 30 minutes. So as you can see, by the relation of pressure and temperature, the time to cook the food on Mount Everest is definitely much longer compared to what it is on the ground surface. तो हमें ये समझ में आ जाता है कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेशन में है. इसीलिए माउंट एवरेस्ट पर क्योंकि प्रेशर कम था तो टेम्परेचर रीच करना भी मुश्किल हो गया है. So that is why it takes longer on Mount Everest. Now moving forward, we have Boyle's law. Does any one of you has any idea what is Boyle's law? किसी को कोई आइडिया है? What is Boyle's law? Yes, any one of you? How would you define Boyle's law? Exactly. So Boyle's law states that pressure and volume are inversely related. So if you have got pressure and volume in a certain place और आप प्रेशर को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप वॉल्यूम के साथ क्या करोगे? आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर दोगे. So if I'm like trying to increase the pressure, I'm reducing the volume. In against of it, if I have a case जहाँ पे मुझे प्रेशर को कम करना है, if I want to reduce the pressure, what I will do? I will increase the volume. तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है बॉयल्स लॉ का. अब बॉयल्स लॉ का अपना एक सर्टेन फॉर्मूला भी है. द फॉर्मूला इज P1 V1 is equals to P2 V2. Now over here what we need to understand is that P1 and V1 are the pressure and volume. They are the pressure and volume at the first place, while P2 and V2 are the pressure and volume at the second place.
Now the point worth noting over here is कि हमने ये तो समझ लिया what is the P1 V1 and P2 V2 are representing, but where do they apply, where do they imply, like कैसा होगा इनका क्वेश्चन, तो वो हम जरा चेक कर लेते हैं. So let's say if I have a lake having a bubble at the bottom, with a volume of 8 cm cube. While at a pressure of 2.5 atmospheres. Find the volume at the top of the lake. Now this is exactly a past paper question. ये same question past papers में assess हो चुका है, and we need to solve this. तो आपने सबसे पहले इसकी एक फिगर बनाकर समझना है इसे. So what happens is that on the very base of this particular lake, आपके पास एक bubble था, a bubble of air, and it was having a volume of 8 cm cube, while the pressure being applied onto it was 2.5. Now they are asking कि हमने इस bubble को पकड़ा and we brought it to the very top. We brought it to the very top. ये जब top पर आ गया है तो इसका volume कितना होगा? What would be the volume of it? And they haven't mentioned the pressure either. Like बिल्कुल जो top है water का वहाँ पे pressure भी mention नहीं है. So you need to pick up some concept over here, which is that जब भी आप किसी एक particular space में हैं and you are only in contact with air, तो वहाँ पे सिर्फ atmospheric pressure apply होता है. The air pressure is being applied. तो इस bubble पे अभी जो pressure है वो सिर्फ atmospheric या air pressure है. Can anyone of you tell me what is the value of air pressure? यहाँ पर हम air pressure कितना consider करेंगे? Exactly. We will consider the pressure to be 1 atm. Okay, अब क्वेश्चन ये है कि सर 1 लाख क्यों कंसीडर नहीं कर सकते? तो 1 लाख हम इसलिए कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो सेकंड प्रेशर है दैट इज इन एटमॉस्फेयर्स. तो हम फर्स्ट प्रेशर को भी एटमॉस्फेयर्स में कंसीडर करेंगे. Both of them shall have the exact same unit. Now we have got the values of P1, V1. We have got the value of P2. We need to figure out the value of V2. तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास P1 V1 is equal to P2 times V2. अब इसे आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है जल्दी से, क्विकली. Okay, so we are having our answer as 20. Could anyone of you confirm whether you are also getting 20 or not? Yes, Mina, Amna. Are you getting the answer as 20 as well? Okay, so we have P1 as 2.5. We multiplied it with 8 and we are having 1 on the other side with the volume which is unknown. So this is going to be 20 as the volume. Perfect. So now we are moving forward
and we now need to understand the concept of manometers. अब हमें manometers को समझना है. Okay, so manometer is an instrument that is a J-shaped tube and it is used to find the difference in pressure. It is used to find the difference in pressure. अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि डिफरेंस इन प्रेशर किन चीजों का फाइंड करेगा. मैनोमीटर विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर. ओके, बट what are going to be the objects जिनका difference of pressure ये find करेगा. So it is going to find the difference in pressure of gases. So it will look something like this. It will have two different gases attached to it. इसके साथ दो अलग gases attach होंगी कुछ इस तरीके से. And it will be filled with a certain liquid. Most probably, or you could say most commonly, it is generally filled with mercury. Mercury से filled होता है ये. So this side is gas A and the other side is gas B, filled with mercury. Now the point here is कि mercury हमने fill तो कर लिया है, but how will we find the difference in pressure with it? तो होता कुछ ऐसे है कि mercury जब आपने fill कर दिया है तो उसके बाद आप gases को open कर देते हैं. You let the gases to come into the manometer. जब gases manometer से अंदर की तरफ आएंगी, both of them are going to apply some pressure or some force onto the mercury. mercury पे कुछ एक force ये apply कर रहे होंगे. So this force is going to be surely different for both of them. दोनों की force में कुछ difference होगा. So let's say this one is having a force of 200 pascals. इसका pressure आ गया 200 pascals, while the gas B is having a pressure of only 120 pascals. So as we can see, gas B का जो pressure है वो कम है, gas B की force कम है, तो उससे क्या होगा that the liquid would squeeze from one side. The liquid will squeeze from one side and will rise from the other side. तो ये दूसरी साइड से rise कर जाएगा. Now the concept of this is कि आपके पास यहाँ पे जो liquid है उसमें एक difference in height आ चुका है. The difference of height is going to be used to find the pressure. अब हम इस height के difference को use करेंगे. Let's say this is 12 centimeter. We are going to use this difference of height to find the pressure. Pressure के लिए हमारे पास formula है rho GH. Since we are dealing with liquid, liquid को use कर रहे हैं हम, तो हम rho GH use कर रहे हैं यहाँ पे. Now the formula is rho GH. आपको density given होगी for the mercury. Let's say it's 1500. The gravity is 9.8 और height आपके पास इस क्वेश्चन में given है 12. So can any one of you tell me the difference in pressure? What is going to be the difference in pressure? Okay, so we have our answer as 176, 400. No, this is not going to be the answer. Just recalculate it. Husna and Amna, can you tell me the answer?
All of you need to solve this. Yeah, I'll explain it again. आप मुझे इसकी वैल्यू बता दें पहले, then I'll re-explain all of this concept. Okay, so it's 176,400. Yes, Mina, your answer was correct. So this is 1,76,400 pascals. Now, the point here is कि हमारे पास गैस बी की साइड से ये लिक्विड राइज क्यों कर गया? Why is it like increased from gas B side while from gas A side it has plunged down? नीचे की तरफ आ गया गैस A की साइड से, गैस B की साइड से ऊपर चला गया. Why is that so? इसका रीजन ये है कि आई एम श्योर आप लोगों ने सीसॉ प्लैंक देखा होगा पार्क्स में, on which two different kids are sitting down. तो जहां पर भी एक heavier kid बिठाया जाता है, on that side the seesaw plank will come down. तो बेसिकली होता यह है कि जब भी कभी आपका प्रेशर जिस साइड से कम होगा वहां से प्रेशर या जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ आना इनएविटेबल है, लाइक इट्स कंफर्म. व्हाई? बिकॉज यू आर अप्लाइंग मोर फोर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड और राइट साइड से इतनी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही. तो ये जो एयर पार्टिकल्स या गैस पार्टिकल्स होंगे लेफ्ट साइड पे, वो इसको लिक्विड को स्क्वीज करेंगे, दे विल स्क्वीज द लिक्विड डाउन, और दूसरी साइड से वो लिक्विड को ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मैनोमीटर एंड द यूज ऑफ मर्करी ओवर हियर. मर्करी सिर्फ इसलिए यूज होता है बिकॉज it like takes the pressure from the higher pressured gas and moves to the other side. So this is the main purpose of this entire like liquid and this entire instrument. और जो difference in height आ रहा होता है दोनों sides में, उसको फिर हम use कर लेते हैं. I hope this is now perfectly clear. अब आगे की तरफ move करते हैं. We need to have one particular point in our memory from here. It is that 1 atmosphere of pressure is equal to 76 centimeter or 760 millimeter of mercury. तो जब भी कभी आपके पास एक मर्करी मैनोमीटर है और उसमें आप दो गैसेस अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम ईच साइड, और मर्करी की हाइट आपके पास आ जाती है 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर, लाइक ओवर हियर वी वर हैविंग 12 सेंटीमीटर. तो अगर ये 76 सेंटीमीटर होता तो हमने डायरेक्टली आंसर लिखना था इसका. डायरेक्टली आंसर क्या होता? फिर हमारे पास प्रेशर का 1 ATM और यू कुड नेम इट एज 1 लाख पास्कल्स. तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे. एग्जामिनर अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं इन एमसीक्यूज के 1 लाख पास्कल्स या 1 ATM का मरकरी की हाइट पर कितना इम्पैक्ट होता है. व्हाट इज द हाइट ऑफ मरकरी फॉर 1 लाख पास्कल्स, ये हमसे पूछते हैं एग्जामिनर. तो हमने डायरेक्टली ये बताना है कि एग्जामिनर भाई अब हम पढ़े लिखे हो चुके हैं, नाउ वी आर एजुकेटेड एंड वेल ट्रेन्ड. तो हमें मालूम है कि 1 ATM या 1 लाख पास्कल्स 76 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है या फिर 760 मिलीमीटर के इक्विवेलेंट होता है. एंड द थिंग ओवर हियर इज कि 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर एग्जैक्टली सेम होते हैं. 76 सेंटीमीटर is equal to 760 millimeter और 0.76 मीटर. इनमें से जो भी क्वांटिटी वो यूज करेंगे all of them are going to have the same value. 76 सेंटीमीटर कहें, 760 मिलीमीटर कहें या 0.76 मीटर कहें, एक ही मतलब है. Now moving forward, we need to understand the last point from this particular chapter. और फिर हमने एक दो पास पेपर के क्वेश्चंस करने and we'll wrap up this chapter. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि हमें ये पर्टिकुलर फिगर दे दी जाएगी.
they will say that you have a difference of 12 centimeter in pressure of gas A and gas B. अब इसको in terms of height लिखने के लिए अगर हमसे पूछ लें, like the examiner says us to write the difference in pressure in terms of height, तो वो कैसे लिखा जाएगा? So we will say that pressure of gas A is 12 centimeter more than the pressure of gas B. Now the point here is कि हमने ऐसे क्यों लिखा है? Why are we writing it like this? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर्स हैं, अगर उनकी वैल्यूज मेंशन ना हो तो हमें ये नजर आ रहा है that pressure of gas A is surely more and the pressure of gas B is definitely lesser. गैस ए का प्रेशर ज्यादा है, गैस बी का प्रेशर कम है. Since they haven't provided us with any sort of value, तो हम फिर in terms of height define करते हैं इस particular event. In terms of height कैसे define करेंगे? हमने ये देख लिया है कि गैस ए का प्रेशर ज्यादा है. कितने सेंटीमीटर ज्यादा है? 12 सेंटीमीटर ज्यादा है. So we will say that the pressure of gas A is 12 centimeter more than the pressure of gas B. और अगर हम इसको differently लिखना चाहें, like we want to write it the other way around, तो फिर कैसे लिखेंगे? फिर हम इसको लिखेंगे that the pressure of gas A, the pressure of gas, in fact, the pressure of gas B is 12 centimeter. गैस B का प्रेशर ज्यादा है या कम है? Can anyone of you tell me? Pressure of gas B is 12 centimeter more or less? Yes, it is less than. Pressure of gas B is 12 centimeter less than the pressure of gas A. तो ये दोनों ही मेथड्स एक्सेप्टेबल हैं. बोथ ऑफ दीज मेथड्स विल रिवॉर्ड यू फुल मार्क्स, लेकिन ये यूजुअली एमसीक्यूज के लिए आता है. अब मैं आपको एक एमसीक्यू का रेलेवेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द अदर रेलेवेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस. तो एक बार हमारे पास एग्जामिनर भाई ने एक क्वेश्चन दिया था in which he gave us a manometer like this. और यहाँ पर इन्होंने हाइट का डिफरेंस लगाया था एज 9 centimeter on each side. Now, if you see, this is 9 centimeter and this is 9 centimeter as well. And from here, he was blowing in air. From the other side, he was blowing in gas A. अब पॉइंट ये है कि प्रेशर किसका ज्यादा है? गैस ए का प्रेशर ज्यादा है या एयर का प्रेशर ज्यादा है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी which one has a higher pressure? Yes, quickly. गैस ए का प्रेशर ज्यादा है या गैस ऑफ एयर का प्रेशर ज्यादा है? Air is having a lesser pressure. Yes, A is having more pressure. ऐसा क्यों है? If you see, गैस A की साइड से मरकरी नीचे जा चुका है. From the side of gas A, mercury has went downwards, while from air's side, mercury has went upwards. तो गैस A का प्रेशर of course definitely ज्यादा है compared to air. Now, if we talk about the difference in height, तो difference in height आता है total, like from the level of mercury from A side to the level of mercury from the other gas side. Like air की तरफ से देखेंगे और A की तरफ से देखेंगे मरकरी के लेवल को और टोटल हाइट फिगर आउट करेंगे.
So what is the total height? Can any one of you tell me? Yes, it's 18. Very good. So we will say that pressure of A is 18 centimeter more than air. Now I'll repeat this entire concept again. What you first need to see is, you need to see कि liquid कहाँ से नीचे की तरफ move कर गया. So as you can see, the liquid has moved downward from the side of A. While if you see from the side of air, it has moved upwards. Air की side से mercury ऊपर की तरफ move कर गया. So we can directly say that the pressure of A is more and the pressure of air is less. Now, in terms of height, अगर हमें define करना हो, तो हम देखेंगे that what is the difference in height. The total difference in height turns out to be 18 centimeter. उन्होंने 9 break करके इसलिए लिखा था so that we could be a bit confused. तो हम क्या करेंगे, हम total height को consider करेंगे, which is 18 centimeter in this case, and then we are going to sort it out और हमारे पास final height आ जाएगी. Now I have like defined it in terms of height over here, and we can say that pressure of A is 18 centimeter more than air pressure. Now moving on to a past paper question. हमारे पास एक question था in which the examiner was saying that you need to figure out the pressure of a chair onto the ground if the weight is 400 and the area of each leg is 0.01 meter square. Now we were asked to solve this and figure out the total pressure. हमें total pressure figure out करना था इस particular case में. तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स ने की वो ये कि उन्होंने फॉर्मूला ठीक नहीं लगाया. So the formula we need to use is P is equals to F upon A. P is equals to F upon A का फॉर्मूला हमें यूज करना है. Once we have like used this formula, तो हमें एरिया की वैल्यू सही से यूज करनी है. We are asked to find the pressure of chair. Like पूरी चेयर का प्रेशर फाइंड करना है और जो हमें एरिया गिवन है वो सिंगल लेग का गिवन है. We have been provided with the area of single leg. ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की थी, they placed the force as 400 and the area as 0.01. अब ये गलती कर दी है. Why? Because they are not considering the area of all 4 legs. तो 4 legs का एरिया कितना हो जाएगा? Area of 4 legs would be 0.01 times 4, and it turns out to be 0.04 meter square. अब हमारे पास total area आ गया है. We have got the force as 400. We have got the area as 0.04 और मुझे अब pressure find करना है. Can anyone of you tell me the value of pressure over here? Yes, we have got the answer as 10,000. So it is 400 over 0.04. The answer turns out to be 10,000. ऐसा यूनिट लिखना नहीं भूलना है, which is pascals.
Now, moving forward, we have another similar question. And over here, they are saying that a student applied a force of 140 Newton on a brake pedal of 8 centimeters square. Find the force on wheel with area of 120 centimeters square. Now they have provided us with the force and the area of the first side, and we need to figure out the force of the other side if we have been provided with the area of the other side. Now, can any one of you tell me which formula is going to be used over here? कौन सा formula use करेंगे हम? Yes, can any one of you tell me which formula is going to be used? Very good. It's F1 over A1 is equals to F2 over A2. Now the force of the first side is 140. The area of this side is 8. Then the force of the other side is unknown, which is going to be X. And the area of that side is going to be 120. Now, all of you need to solve this quickly and tell me the answer. What is going to be the force on the wheel? $2100. ऐसा यूनिट लगाना नहीं भूलना है. जब भी कभी आंसर दें फिजिक्स में तो ऐसा यूनिट लाजमी इम्प्लाई करें. So it is 2100 newtons. Okay, so we are done with chapter pressure. You are going to be provided with past papers as well as the screenshots of all of these notes. And we'll probably be doing a quick test in our upcoming class, or surprise test hoga, so we can have it on any day of this coming week or maybe the next week. So we are done with pressure, but before leaving, kindly just confirm if all of this was perfectly clear. या आप लोगों में से किसी को कोई issue है? Was it all clear to all of you? Okay, so we'll keep it till here. See you then in the next class. Take care. Allah Hafiz.